So students, I am Praveen welcoming you in the session of IT. And we have started our unit 3, which is entitled by Database Management System. And we are doing our unit 2, which is about the how we can create a table, how we can create a database. So in the previous class, I have told you and also shown you the practical implementation of the database and how you create a table. So let's take a quick recap what we did yesterday. So supposingly we want to create a table. Okay, supposedly we want to create a new table. So what we need to do is we need to click here, use wizard to create table. Okay, what we need to do is we need to click here, use wizard to create table, because there are two methods to create a table. There are two methods to create a table. First is use wizard to create table, first of all, and then second, using design view. Okay, so we were learning the very basic and very first method is use wizard to create table. So I'm double clicking on it. Students, please zoom your interface, zoom your screen so you can easily access it, so you can easily understand it. Okay, so when you will click on this use wizard to create table, you will be prompted to a new window. You can see here. Okay, so now you will find the 4 option here. What are the 4 option is select field, set types and formats, set primary key, and create table. So first of all, we need to select a field. Field means columns. Okay, so there are 2 category available here, business and personal. It's up to you that which category you are going to opt. So for example, for instance, we are selecting business category. In the business category, we'll find some sample tables. Okay, so in this sample table, automatically, or you can say the predefined available fields will be here. Okay, so you can just inherit them and use them. Okay, so these are the available fields in the assets table. Supposingly, I am creating a table named orders. Okay, so now you will find the different fields related to the order table. Supposingly you want to insert customer ID, then you will click here and then this arrow button will be enabled. If you want to inherit it, then you will select from this arrow key. Supposingly you want to create a table which consists order date, then you will click here and then you will select this tab key. And supposingly you want to insert ship name, then just add it. So what happened if you will select this tag, so all the fields which is already available in the orders table will be selected. Supposingly you do not want to order date, so you will select here and then you will select this button. Okay, if you will select this button, then this order date column वापस से जो है अवेलेबल फील्ड्स में चला जाएगा. ठीक है, सो आई थिंक ये आप लोगों को पता चल चुका था. चलिए, कस्टमर टेबल मेरे को ज्यादा इजी इसलिए लगती है बिकॉज इट हैव अ वेरी कॉमन और यू कैन से वेरी इंटर रिलेटेबल फील्ड्स. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कस्टमर्स टेबल. ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ, सभी को जो है मैं वापस से रिटर्न कर देता हूँ. नाउ आई विल सेलेक्ट द कस्टमर टेबल हियर. सपोजिंगली आई वांट टू क्रिएट अ टेबल इन विच I want first name. So here I am creating first name, then last name, mobile number, let's say address, and email address. That's it. So I am creating a table in which I am having a 5 column: first name, last name, mobile number, address, and email address. Then I will click on the next. Here, now you are being prompted to set types and formats. Now, as I have told you in the offline classes that there will be 4 information you have to type. Okay, so what are these 4 keys? Field name, field type, entry required, and length. Field name is first name. Field type is which kind of data you want to store in your column. So it's very obvious to understand, if we are dealing with the first name, that means we are storing the data into varchar category. Okay, because we are dealing with spelling, word, sentences. So as I have told you in the offline classes, that if you are dealing with a word, spelling, character, that means alphabetical data, then you will access the varchar. Now it is asking you that, do you want to create this column as mandatory or not? So if you want to create this column as a mandatory, then you will select this here, yes. Otherwise, by default, no. So I am creating this as a mandatory field.
Now, if you want to just change the size of this text box, or you can say the column, then you can change it from here. Length is equals to 50. You can change it accordingly. Let's instance, I'm giving it 30. Okay. So this is how you can just create your own table and you can also edit it. Now I'm clicking on the next. Now, the number third step is that set primary key. As I have told you in the classes that if you are creating a table, you must design a primary key. So that primary key will help you to identify the unique data. Okay. To help you identify the unique data. Just a second. So if you will create a primary key, then you will be having two options: automatically add a primary key or use an existing field as a primary key. If you will click on this automatically add a primary key, that means you are just allowing open office base to create one more column. Okay. Apart from that, you have selected, जो भी आपने select किया था उसके अलावा एक और column वो बना देगा, इसके लिए primary key के लिए. But अगर अपने यहाँ पर use an existing field as primary key select करेंगे, तो जो भी आपने field name लिए थे, जो भी आपने columns लिए थे, उन्हीं में से एक को अपने क्या बना सकते हैं, as a primary key बना सकते हैं. So here I am clicking, for instance, automatically add a primary key. That means it will create a one more column. Now if I will select on this checkbox, that means auto value, तो ये यहाँ से क्या करेगा, अपने आप ही वैल्यू इंसर्ट करता जाएगा. आपको एक्सप्लिसिटली वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है. फिर मैंने इसको भी टिक कर दिया, फिर किया मैंने नेक्स्ट. अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू नेम योर टेबल. आप अपने टेबल का नेम क्या देना चाहते हैं. सो इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस ऑर्डर्स नेम, देन गो फॉर इट. अदरवाइज यू कैन जस्ट चेंज इट आल्सो. सो मैं ऑर्डर्स को ही ऑर्डर्स रहने देता हूं. यहाँ पर देखिए व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट. अब आप टेबल बनाने के बाद करने क्या चाहते हैं. ठीक है. तो इंसर्ट डेटा इमीडिएटली. क्या आपको जो हैंड टू हैंड उसमें डेटा एंट्री करनी है, या उसमें आपको केवल टेबल का डिजाइन मॉडिफाई करना है, या आपको उसी टेबल के बेस पे एक फॉर्म बनाना है. फॉर्म हम बनाना सीखेंगे, ये शायद आपके सेशन नंबर 4 या 5 में है, तो वो बात की बात. ठीक है. यहाँ पर अपन ने क्रिएट किया, फिनिश. ये देखिए आपकी टेबल बन के आ गई है. अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, ऑर्डर स्टूडेंट ओपन ऑफिस बेस. ऑर्डर क्या है, हमारे टेबल का नेम है. स्टूडेंट क्या है, हमारा डेटाबेस का नेम है. यहाँ पर आप देखेंगे आईडी के नीचे क्या लिखा आ रहा है, ऑटो. और यहाँ पर ये ग्रीन की का मतलब क्या है कि ये प्राइमरी की है. यहाँ से आप इसकी विड्थ वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ईज, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. ओके. ठीक है. इसको बस ड्रैग करना है आपको. स्टिल स्टूडेंट्स आर कमिंग. So here primary key or mobile number, address, whatever you want to do. So now I will tell you how you can insert data in your table. Okay. So supposingly I want to enter here first name as my name. Let's say mobile number. Let's say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. And address I'm just writing Bikaner and abc@gmail. Okay. Now once I will press the enter, you will find that ID जो है उसमें अपने आप ही एक इसने क्या ले ली है, वैल्यू ले ली है. यहाँ पर अपन ने इंसर्ट नहीं किया, बट उसने अपने आप ही बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू ले ली है, और वो वैल्यू क्या है, 0 है. ये इंश्योर करेगा कि जो भी वैल्यू होगी वो यूनिक होगी. ठीक है. ये वापस 0 को रिपीट नहीं करेगा. लेट्स सपोज मैंने सेकंड नंबर कुछ भी लिया, लेट्स से राहुल, let's say Sharma, and whatever the digit I am giving here. Okay. For instance, I am writing here Jaipur and xyz@gmail.com. Once I will click here, enter, you will find that ID में वापस से क्या आ चुका है, 1 आ चुका है. यानी कि ये ऑटो वैल्यू, यानी कि खुद से ही ये वैल्यूज ले रहा है. तो आई होप दैट कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अपने को टेबल कैसे क्रिएट करनी है. और साथ ये आपने टेबल क्रिएट करने किस मेथड से सीखी है, विजार्ड मेथड से सीखी है. ठीक है. तो विजार्ड मेथड में आपने को क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को ये डील आउट करता है. ठीक है. तो यहाँ से अपन ने ये देखा कि अपने टेबल में डेटा को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं. एक और मेथड है जो मैंने आपको कल बोला था कि टेबल को क्रिएट करने के 2 मेथड होते हैं. एक तो होता है यूज विजार्ड, और एक क्या होता है, यूजिंग डिजाइन व्यू. तो अपन ने अभी तक क्या देखा है, यूज विजार्ड, और अब अपन देखेंगे यूज डिजाइन व्यू.
So as we have discussed how you can create a table using wizard, now you can see the very first option here in the table database task is create table in design view. Now I'm double clicking on it. Here it is. Please zoom your screen to see the perfect and clear picture. So here you will find only the three columns: field name, field type, and the description. Description is very optional. You can skip this step. So this is the field name. That means it is asking the column name, and field type, that means which type of data we are going to use. Let's say first I'm creating ID for primary key. Okay. Now it automatically take the text varchar. Now question arises that which kind of data does open office take by default? So your answer will be text ब्रैकेट में varchar. ठीक है. अब अपने को यहां से मान लो इसको चेंज करना है, जस्ट सिंपली एक क्लिक करना है, आपको सिंगल क्लिक करना है. यहाँ पर आपको एरो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रही होगी. यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे डेटा टाइप जो अपन ने पढ़े हैं क्लास के अंदर या जो मैंने आप लोगों को बताया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे. अब ऑब्वियस सी बात है, आईडी के लिए आप क्या यूज करेंगे, इंटीजर या फिर नंबर. तो हियर आई एम सिलेक्टिंग इंटीजर. ठीक है. अब मान लीजिए मुझे इस आईडी को प्राइमरी की बनाना है. चलिए इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं. पहले मैं आप लोगों को नेम वगैरह बता देता हूँ. नेम टेक्स्ट varchar में ही आएगा. क्लास अगर आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टोर कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं. सो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया नंबर. एज, एज तो ऑब्वियस सी बात है, ये नंबर में ही आएगा. लेट्स से मेरे को यहाँ पर क्या करना है, डीओबी. डीओबी टेक्स्ट के अंदर आएगा या डेट के अंदर आएगा. सो योर आंसर विल बी डेट. ओके. सो यहाँ मैंने क्या किया है, 5 कॉलम्स बनाए हैं, 5 कॉलम्स, आईडी, नेम, क्लास, एज एंड डीओबी. देखिए विजार्ड के अंदर क्या था, बहुत स्टेप्स थे उसमें. नेक्स्ट 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 करके आप लोग क्या कर रहे थे, टेबल्स क्रिएट कर रहे थे, बिकॉज इट्स नेम एज अ विजार्ड. बट यहाँ पर डिजाइन व्यू में क्या है, आपको 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन. इसमें से 2 ऑप्शंस तो बहुत ही इजी है, जहां पर आपको बस नेम लिखना है और उसका डेटा टाइप सेलेक्ट करना है. ठीक है. अब मान लीजिए मुझे इस आईडी को क्या बनाना है, प्राइमरी. तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉलम, जब मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया था तो ये कॉलम मैंने ब्लैंक भी छुड़वाया था. तब कई स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर ये ब्लैंक क्यों है ना. कई बच्चों ने आर्ग्यू किया था कि सर ये ब्लैंक क्यों है. तो ये ब्लैंक इसके कुछ, ये रो हेडर कहलाता है. किसका हेडर कहलाता है, रो हेडर. ठीक है. तो रो हेडर क्या करता है, अपने को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. यहाँ से आप देख सकते हैं कट, कॉपी, डिलीट, इंसर्ट रोज एंड प्राइमरी की. तो अगर मुझे इस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है, देन आई विल क्लिक हियर एज अ प्राइमरी की. नाउ यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ द हियर साइड. यू विल फाइंड अ गोल्डन की हियर. ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये क्या बन चुका है, अब प्राइमरी की बन चुका है. अब देखिए एक और चीज जो आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है, ये है यहाँ पर आपकी फील्ड प्रॉपर्टीज. मार्क माय पॉइंट है स्टूडेंट्स, फील्ड प्रॉपर्टीज. अगर मैंने आईडी की बात की तो यहाँ पर फील्ड प्रॉपर्टी में मुझे क्या क्या मिल रहा है, ऑटो वैल्यू, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू है, फॉर्मेट एग्जांपल. ऑटो वैल्यू आपको बताने की नीड नहीं है, आपको पता चल चुका है. ऑटो वैल्यू का मतलब है अगर मैं इसमें यस करता हूं तो ये अपने आप से ही जनरेट करेगा वैल्यूज इसकी, और अगर मैं इसको नो करता हूं तो यानी कि मुझे एक्सप्लिसिटली इसमें एंटर डेटा करना पड़ेगा. तो मैंने इसकी ऑटो वैल्यू कर दी ताकि मुझे इसके अंदर तो एटलीस्ट डेटा ना एंटर करना पड़े. लेंथ यहाँ पर मैं कुछ भी रख सकता हूँ. मिनिमम लेंथ जो इसकी होती है वो 10 होती है, इसको आप एक्सीड कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पर आपको फॉर्मेट एग्जांपल है, ये अपने को नहीं देखना है. नेम, नेम के अंदर आपको देखिए एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू और फॉर्मेट एग्जांपल. क्लास, ठीक है, यहाँ पर एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, डेसिमल प्लेसेस को अगर आप डील करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. एज भी वही है. अब डीओबी की बात देखते हैं. डीओबी में देखिए क्या आप इसको एंट्री रिक्वायर्ड यानी कि नो यस करना चाहते हो, इट्स अप टू यू एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर, एज अ डीबीए. Now I want to tell you, I want to show you this format example. Mark my point student, this is a very important topic which I'm going to describe here. Format example, you have to click here in that 3 dots. Once you will click here in the 3 dots, you will find certain options. Okay. So category कौन सी है, date. फॉर्मेट, अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में कि फॉर्मेट में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे. अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से फॉर्मेट में आपको डेट जो है वो स्टोर करानी है. DDMM22Y यानी कि यहाँ पर आपको केवल जो है Y यानी कि ईयर को केवल 2 डिजिट से रिप्रेजेंट करना है. सो यू कैन चूज दिस फॉर्मेट. और अगर आपको 4 डिजिट में इसको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर ये आपको वो भी कर सकते हो. ठीक है. यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ओके किया और उसके बाद ये जो है इसका फॉर्मेट वो ले लेगा. ठीक है. जब अपने इसके डेटा एंट्री करेंगे तो इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ तक
आप लोगों को आई होप कि समझ में आ चुका होगा। ये जो है अपन ने क्या किया है, डिजाइनिंग किया। अभी तक अपन ने केवल इसकी डिजाइनिंग की है। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपने को कंट्रोल एस या फाइल में एस करके सेव करना होगा। सेव करने के बाद है ऑब्वियस सी बात, वो अपने से टेबल का नेम पूछेगा। सो लेट्स से मैंने इसका नाम दे दिया एग्जाम्पल 1 2 3। वहां पर मैंने इसको ओके किया और ये अब अपना क्या बन चुका है, एग्जाम्पल 1 2 3 नाम की टेबल बन चुका है। अब अपने को इसको करना होगा क्लोज। नाउ यू कैन सी देयर example 1 2 3 table. If I will double click on it, it is allowing me to do the data entry. सिंपल सी बात है, वही सेम तरीके से टेबल बन चुकी है अपनी। आईडी आ गई, अपन ने डिफाइन किया था, नेम आ गया, अपन ने जो डिफाइन किया था क्लास, एज और डीओबी, दैट मींस डेट ऑफ बर्थ। मैं केवल इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ का ही वैल्यू एक बार इंसर्ट करके आपको दिखाता हूं ताकि आप इसका फॉर्मेट समझ सके। लेट्स सपोज आई एम एंटरिंग 5 और मैं कुछ नहीं लगा रहा, ना ही हाइफन लगा रहा हूं ना ही स्लैश लगा रहा हूं, 561999। और जैसे मैं इसको एंटर कर रहा हूं, देखिए कि अपने आप ही जो है उसका डेटा फॉर्मेट ले रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये जो डेटा फॉर्मेट है ये इस तरीके से क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है सर्टेन फॉर्मेट एग्जांपल और उसमें देखने पड़ेंगे, इसको और मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मैंने केवल अभी आपको एक एग्जांपल शो किया है। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द टेबल इन बोथ वे, using wizard way or using design view. Okay. After completing the practical implementation of the session 2, now it's time to start the session number 3, which is entitled by the perform operations on table. Yes, as the name is suggesting of this session, that in this particular session we are going to understand how we can deal with the table. Dealing with the table means that we are going to insert some data into our table. We will edit it, we will delete it, we will just change its properties, we will sort it out, we will create some relationship between the tables. That's why we are understanding the RDBMS, that means Relational Database Management System. So let's start this session. So first of all, it's given here inserting data in a table. Students, I have mentioned or I have just pasted here the screenshot of the IDL also, so you can better understand. Okay. So as I have told you, as I have shown you also how you can insert the data in a table. Once you have created a table, then you can easily just by clicking the double click, single click, you can insert the data. How you will insert the data? By just clicking on the cell. That's it. If you are clicking on the cell, it will highlight it and then you can start the typing. That's it. Table, double click on it and the table will open in a data sheet view. Data sheet view, that means data sheet view, as the name is again suggesting. You can now start typing, you can now start inserting the data. Okay, here it is. That is the example of how you can insert the data. Next topic is that editing records in the table. Supposingly you have entered some data into your table, now you want to edit it. By default, you just mentioned here Chennai, Delhi, but now you are supposed to change the city name. Supposingly instead of Chennai, you want to write the Mumbai. So how will you edit it? Very simple. To edit the data, either click on the edit icon here. This is the edit icon. Okay, this is the edit icon. Let me spotlight it. Okay, this is the edit icon. Or you can just simply single click on it. If you will single click on it, it will be highlighted. And once it will be highlighted, then delete it and write whatever you want to write. Okay, so what are the two steps? First of all, you can opt for this edit, or you can opt for that single click. Okay. Okay. Some one student is saying me that, please repeat this. So that means if you want to edit the record, that means you want to change the record. Supposingly you do not want to write here Delhi, you want to write here Bikaner. So just click on this cell, it will be highlighted, and once it will be highlighted, you can change the record. The second method, if you want to change this city and first rows as a Delhi to Bikaner, click here, click on this edit data, it will be highlighted, and then you can change it accordingly. Next topic is that how you can delete record from the table. Very easy though. Okay, so first of all, you have to select it, right click on it. Once you will right click on it, you will find this option: cut, copy, delete, select all in special character. What are you learning? You are learning delete. Then you have to click on the delete button, or you can just simply single click on it,
press the delete key and the cell will be empty. Okay, so I hope that you are understanding what I'm saying to you. The next topic is field property. This property is very important for you, student. And now you can see I have already told you. Sorry, student. Okay, field property, yes. This is the field property, which I have already told you in the practical manner. So now it's time to understand its theory first. Okay, so here it is. To change the field property, table structure in design view has to be changed. Okay, so now it is saying, if you want to change the field property, then you must create your table or you must inherit your table. Mark a point, inherit or open your table in a design view, not in a wizard view. Whatever the changes you are going to do in your table, it must be happen in design view only. In which view? Design view. Say with me. So to set the field properties, steps will be followed as, okay. So what are the steps? Select the table, obviously. Right click, select the option edit, and then the table design view window will open. In design view, there are different properties of fields according to the data type set for each field. As I have shown you the screenshot and I have shown you the practical implementation of also that there are certain type of values available for the field properties. As you can see here, the title, field properties. Okay. So what are the field properties available? Like auto value. Auto value will only be available for the numerical value. If you are writing first name and you are creating first name as a character value, varchar value, then auto value will not be available for you. This question can arise. Okay, once again, I'm asking the same question. If can auto value be available for varchar or char? What will be your answer? No. It will be only available for the numerical data, arithmetical data. Okay. Now length will be available for every data. Default value, yes, this is important thing. Default value means what value you want to set by default. Supposingly you are creating a column in which you mentioned is as an age and its data type is as a number. Okay, so supposingly if some user do not fill that age, so it will be automatically corrected as 18. अगर कोई उस एज कॉलम को ब्लैंक छोड़ देता है, नल छोड़ देता है, तो भी उसमें 18 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? डिफॉल्ट वैल्यू। इसका भी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, बट इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। कई बार अपने देखते हैं फॉर्म्स वगैरह में, कॉलम्स वगैरह में कि पहले से ही उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ होता है। आप चाहे तो उसको हटा सकते हैं, चाहे तो आप उसको एज इट इज रख सकते हैं। कोई स्टूडेंट मान लीजिए 18 ईयर का ही है, तो उसको क्यों डिलीट करेगा? और मान लीजिए कोई 17 का है, कोई 16 का है, तो उसको डिलीट करके वापस उसको चेंज या मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट, दिस इज द स्क्रीनशॉट। क्या करना होगा आपको? अपने टेबल के अंदर जाना होगा, राइट क्लिक करेंगे, एडिट। एडिट करने के बाद आपको क्या होगा? ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। एक और जो है वो फॉर्मेट एग्जाम्पल, मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। फॉर्मेट एग्जाम्पल में क्या होगा? यहाँ पर आप अपने चीजों को, अपने कॉलम्स को फॉर्मेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ईज। जैसे कि डीओबी को मैंने फॉर्मेट करके बताया था कि किस फॉर्मेट में आप जो है वो डेटा एंटर करना चाहते हो, डी, एम, वाई, वाई या फिर जो भी। ठीक है, तो this is all about today's class. I hope that you have enjoyed this session. So in the upcoming session, I will be telling you about the sorting the data, how you can create relationship between the data. So hope you have enjoyed the session, students.